तो आपके पास ए ऑप्शन हम सब चूज करेंगे जब आपके पास 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हो। देन बी ऑप्शन जब 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो। सी ऑप्शन जब 2 एंड 3 करेक्ट हो। एंड डी ऑप्शन जब सिर्फ 1 करेक्ट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। इन विच आयंस are the number of electrons are equal to the number of neutrons। ओके, तो देखें इन केसेस में इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली इजी है। देखें, बताता हूं कैसे। अगर आप फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9। इसका मतलब है फ्लोरीन के एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पे -1 चार्ज है, तो इट मींस 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। इसी तरह फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के एटम में -1 चार्ज है तो +1 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरह सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एटम में, मगर +1 चार्ज है तो इसका मतलब है -1, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें तीनों के इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। अब अगर न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन करते हैं। तो 19 - 9 10। देखें, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देन वी हैव 31, सॉरी 15 + 1 16 होता है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। और 31 - 15 16 आएगा। तो न्यूट्रॉन्स भी 16 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 16 है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट में जाएं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए 23 - 11 करेंगे, तो जो हमें क्या मिलेगा 12। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है तो इट मींस आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बी सेज 1 एंड 2, तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जी, ये क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 32। Compound X is a straight chain hydrocarbon with a MR of 84। ओके, हाइड्रोकार्बन बता दिया, यानी कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन डिटरमाइंड अबाउट एक्स। एक्स के लिए हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं उसके एमआर से। अगर हमें एमआर गिवन है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं ये भी कर सकते हैं। देखें कैसे तीनों चीजें आइडेंटिफाइबल हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायल एंड एरर ट्राई करेंगे। अगर मैं कार्बन 6 अज्यूम कर लूं तो 6 कार्बन का मास क्या हो जाएगा, 12 × 6। ठीक है, और 12 × 6 मींस 12 6 72, राइट। तो मुझे 84 नजर आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन 12 लूं तो इन हाइड्रोजन्स का मास क्या हो जाएगा 12। तो 72 + 12 मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 84। तो देखें, अब यहाँ पे देखें कि मुझे पता चल गया कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। CnH2n का मतलब क्या है, ये एक अल्कीन है। और अगर अल्कीन है तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। C6H12 मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में C6H12 को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकता हूँ CH2। तो
मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता चल गया, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और अगर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो उस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? ए। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। When a sample of ammonium chloride is warmed, it decomposes into ammonia and hydrogen chloride gas. Okay, we have a equation over here as well. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पे अमोनिया गैस लिबरेट डिकम्पोजिशन हो रही है और अमोनिया गैस और HCl गैस फॉर्म हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इस जगह पे जो गैसेस हैं वो वापस कोल्ड सरफेस पे कंडेंस होके वापस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रही हैं। यानी कि यहाँ से अमोनिया लिबरेट हुई और यहाँ से HCl गैस लिबरेट हुई, और ये दोनों जो हैं जब यहाँ पे आके वापस ज्वाइन हुई तो इन्होंने अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, when the mixture of hot ammonia and hydrogen chloride gases hit a cold surface, a white solid of ammonium chloride reforms. Okay, यही बात अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है, which statements are correct? ओके, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? रिएक्शन 1 इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? रॉन्ग तिशा, इट्स नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज देखें, एक बात हमें पता चल रही है कि ये सिंगल एरो फॉरवर्ड एरो शो हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हमें पता चल रही है कि देखें, सेम कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे हीटिंग होने पे डिकम्पोजिशन हो रही है और कोल्ड सरफेस पे वापस जो है फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना? तो सेम कंडीशंस नहीं है, और अगर सेम कंडीशंस नहीं है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की और प्रोडक्ट में वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की, तो इट मींस ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और हमें रिवर्सिबल का साइन भी नहीं दिया हुआ। और जिस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने का मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होंगी। आपने दोनों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है सी ऑप्शन 2 एंड 3। और देखें, 1 1 1, ए बी और सी तीनों में 1 ऑप्शन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए बी और सी तीनों रॉन्ग हो गए, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अच्छा जी। थर्ड स्टेटमेंट, रिएक्शन 1 इज एंडोथर्मिक, आप इसका पूछ रही हैं तीशा? देखें, ये रिएक्शन 1 है, ठीक है, और रिएक्शन 1 कब हो रहा है? हीटिंग करने पे हो रहा है।
तो हीटिंग करने पे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तभी तो हीट करने पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। और रिएक्शन वन रिवर्सिबल है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुई हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मगर सेम कंडीशन में नहीं हो रहे, इसलिए हम इसे इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं कर रहे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Question number 34. Hydrogen chloride gas is formed by the reaction shown. ठीक है। What? Here we have a equation. What will change the average kinetic energy of the reacting gas particles? जी, हाइड्रोजन क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है, अब इसमें इक्वेशन देखिए आपको क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल चेंज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग गैस पार्टिकल्स। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर एंड एडिंग अ कैटलिस्ट, तो एडिंग अ कैटलिस्ट से तो कुछ नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, मगर कूलिंग अ रिएक्शन मिक्सचर आल्सो चेंजेस द एक्टिवेशन, और सॉरी, चेंजेस द काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये बात सबको समझ में आ रही है? उन्होंने चेंज की बात की है, उन्होंने इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं की। तो दोनों केसेस में, चाहे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या कूल डाउन करें, कूल डाउन का मतलब है कि वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इन बोथ द केसेस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल्स may change. Okay, now adding a catalyst and increasing the concentration. Neither adding a catalyst will increase the average kinetic energy, nor increasing the concentration will increase the average kinetic energy of the particles. So the third statement is wrong, and when the third statement is wrong and only 1 and 2 are correct, then your B option is correct. That B says that 1 and 2 are only correct one. No, तीनों correct नहीं है तीशा। कैटलिस्ट जब हम ऐड करते हैं, व्हाट कैटलिस्ट विल डू, कैटलिस्ट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, so the reaction may occur at the lower energy, but it doesn't affect the average kinetic energy of the particles. average kinetic energy particles की जब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा, that's it. There is no change in the average kinetic energy of the particles. आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एनर्जी पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, एनर्जी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो उतनी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। जी क्लियर है सबको? Now, question number 35. Which oxide will cause a change in pH when added to water? Okay. Yes, can anybody tell me the answer? It's first one or the second one or the third one or all of three? Yes, very good, Hamna. If we recall, when we add a calcium hydroxide to our water, we will get calcium hydroxide, and it's a base. So if it's a base, then now the pH of the solution becomes greater than 7. But when we add aluminium oxide in water, no reaction will occur. In the same way, when silicon dioxide is added to our water, no reaction may occur. So our first statement is only correct and the rest of the two are wrong. So in this case, when there is only first option is correct, then D is the correct answer. Is it clear to everyone?
जी सबको क्लियर है? So for these kind of things you need to remember the reactions of period 3, group 2 and halogens. Okay, now question number 36. Which reaction routes can be used to make a pure sample of barium sulfate? So first you have to recall barium sulfate is insoluble salt. So if it's an insoluble, then in the last case, what will be our observation? That precipitates will form. जी ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay, now have a look at the first route. When barium is heated in oxygen, what we will get? We will get barium oxide solid. And when we add a dilute hydrochloric acid, barium oxide forms barium chloride, which must be an aqueous salt because chlorides of group 2 are soluble. When I add sulfuric acid, it will convert into barium sulfate solid. And if it's a solid, that's why we are doing the filtration, then we are washing, then we are drying. It means our first statement is correct. ये first root सबको clear हो गया? अगर किसी को कोई doubt है या confusion है तो please पूछ लें. जी clear है सबको? Now barium nitrate, strong heating in air, a solid product. So if you recall, when we heat the barium nitrate, the solid product is only a metal oxide. An excess of water, okay, we will get aqueous barium hydroxide because down the group 2 barium, the solubilities of hydroxides increases. So that's why it is excess. It is aqueous. Sorry, not excess, aqueous. So when adding the sulfuric acid, again, what I will get a barium sulfate, and barium sulfate is an insoluble salt. So we will get a solid. So again, if it's a solid, so first we need to filter it, then wash it, and then dry it. So it means our second statement is also, second route is also correct. Is this understandable? Now, third statement, when barium hydroxide is mixed with nitric acid, what we will get? We will get a barium nitrate, right? And all nitrates are water soluble, so it must be aqueous. And then adding a sulfuric acid, we will get a barium sulfate, which is a insoluble, and again we get a precipitate. So to remove the precipitate or to separate the precipitate, we have to filter it and then wash it and dry it. So it means our third statement is also correct. So if all three are correct, then it means our A statement is correct. जी क्लियर हो गया सबको? So A is the correct option for the 36, which means all the three statements are correct. Now, question number 37. Cortisone is a synthetic hormone. Okay, here we have a structure of a cortisone. Which classes of alcohols does the molecule contain? Okay, so have a look. We have a one alcohol over here. We have a second alcohol over here. And we have a third alcohol over here. Right? So can anybody tell me which classes of alcohols we have? Primary, secondary, tertiary? Yes, very good, Tisha. Now, have a look over here. If we look at this carbon is directly bonded to OH, and this carbon is further bonded to one carbon, which means
it's a primary alcohol. Is this understandable to everyone? If we look at this carbon is directly bonded to OH, but if you look, it will be bonded to one carbon over here, second carbon over here, and third carbon over here. It means it's a tertiary alcohol. And if we look at this carbon, which is bonded to a OH, it is bonded to one carbon on this side and the other carbon on this side. So it is bonded to a two more carbons. So it means it's a secondary alcohol. Is this clear to everyone? So we have all three classes of alcohols, which are primary, secondary, and tertiary. So if all three exist in a molecule, so it means we can consider A as a correct option. जी clear है सबको? Okay, now question number 38. Which changes are commonly involved in the formation of an addition polymer? So let me recall you, in addition polymer, there is a only change in the structure. There is a double bond before the reaction, and after the reaction, that double bond is broken and we have all single bonds. So the first statement says the formation of sigma bonds. So is it correct? Yes, there are new sigma bonds are formed, because here you see these all bonds are sigma. So new sigma bonds are formed. The breaking of pi bond, is this correct? Yes, it is also correct, because here if you see we have a one sigma bond and one pi bond, and these all are sigma bonds. So pi bond are broken down. Second statement, it is correct. First statement says formation of sigma bond, it is also correct. The change in hybridization of the orbitals of a carbon from sp2 to sp3. So see, this carbon which is a double bond, have a double bond, is sp2 hybridized, and this carbon which have a all single covalent bonds is sp3. So yes, the third statement is also correct. So if all three statements are correct, then in this case also we have a A as our correct option. जी क्लियर है सबको? Okay. Question number 39. Which alcohols can be oxidized to form an organic compound which will give color precipitates with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent and alkaline aqueous iodine? Okay, so I think this question is relatively typical, a difficult one. If they are talking about the thing that is formed, due to the oxidation, that gives the colored precipitate with 2,4-dinitrophenyl, it means it must have a carbonyl, either aldehyde or ketone. Okay, but the second thing, that it also shows a colored precipitate with alkaline aqueous iodine, so it indicates that this C double bond O must have a CH3 over here, and on the other side it can have, if it's an aldehyde, then it can form a here we have a hydrogen, and if it's a ketone, then we can have a carbon chain over there. ये point यहाँ तक clear है सबको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अल्कोहल पे शिफ्ट और बैक जाएं, इसकी रिडक्शन देखें, तो इट मींस जिस कार्बन पे OH लगा और C डबल बॉन्ड O है, उस कार्बन पे OH होगा, और उसके किसी भी एक साइड पे CH3 ग्रुप होगा,
and the other side have either hydrogen or a alkyl chain. Is this understandable? तो हमारे पास हमें we have to look on the alcohol which have this structure. So you have a three structures in front of you. So can anybody identify by looking at these structure which is the correct answer? No, Hamna, your answer is wrong. Look at this again. Okay, what about the rest of the students? Okay, tell me, what about structure one? Does structure one have a this structure, that CH3, and that CH3 have a carbon neighbor to it, and that carbon have a OH group? Does this structure present in one? Yes. So see, if you see, this is a carbon, and here we have a CH2, and here we have a CH2. So it means that the carbon which have a OH does not bonded to CH3. So it means this is wrong. First statement is wrong. And the smart way to go for the answer, that when you identify that the first one is wrong, it means you have only left with the C option, because the first option is in one, is in B, is in A, is in B, and is in D. So all A, B, and D goes wrong for question number 39, and we are left with the C. That is your correct answer. Is this clear to everyone? If first statement goes wrong, then second and the third one must be correct. Tisha, okay. They are saying that you have to identify an alcohol which on oxidation forms an organic compound. ठीक है, वो जो organic compound बनाएगा वो organic compound 2,4-dinitrophenyl hydrazine से भी react करेगा और precipitates बनाएगा और alkaline aqueous iodine से भी react करेगा. Yes, Hamna, see over here. We have a CH3 over here and C double bond O. And here we have a CH3 and C double bond O. तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है जिसमें जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद वो ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव दे, एक्वस अल्कलाइन आयोडीन वाला टेस्ट भी पॉजिटिव दे और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वाला टेस्ट भी पॉजिटिव दे. तो ये दोनों टेस्ट 2 और 3 तो पॉजिटिव देंगे क्योंकि उनमें सी डबल बॉन्ड ओ या CHOH के नेबर में CH3 है. ठीक है, बट फर्स्ट वन नहीं देगा क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके नेबर में CH2 नहीं है. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Question number 40. Which mixture form a carboxylic acid as one of the product? अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में we have a ester and it means we got a hydrolysis over here. So we got one product like this, the partial product, and the other partial product is this one. So here we got an H and here we got an OH. So it means we are getting a carboxylic acid, C double bond OH. So the first statement is correct, right? And here we have a carboxylate ion and we are adding a acid. So what acid will do? Acid will release its hydrogen ion. So that hydrogen ion will be bonded with the O and we are left with this thing.
So again, we are getting a carboxylic acid. So second statement is also wrong, also correct, sorry. Now, in the third statement, we have an aldehyde, and aldehyde and sulfuric acid does not react. So third statement goes wrong. And if the third statement goes wrong and we have a first and second correct, then it means B is the correct answer. Is this understandable to everyone? जी यहाँ तक क्लियर है सबको?